एप्लीकेशंस ऑफ फेज डिस्प्ले। जैसा कि हमने इसको डिस्कस किया कि जो फेज डिस्प्ले है इसको फॉरेन प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए और स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि प्रोटीन किस तरह से जो फेज कोट की प्रोटीन्स हैं उनके साथ फ्यूज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं और इनको कैसे हम स्क्रीन कर सकते हैं बाय यूजिंग नोन टारगेट्स दैट मे हैव बीन immobilized on some surfaces. So this is the basic protocol of phage display technology. Now, what are its applications? कि इसको किस मकसद के लिए डेवलप किया गया है? एक तो बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम जो प्रोटीन एक्सप्रेस करती हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं. And this process of detection of proteins, it can be discussed under the heading protein to protein interaction. कि जो प्रोटीन्स फेज सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हुई हैं उसको हम नॉन टारगेट जो कि इमोबिलाइज्ड है ऑन द सरफेस उसको यूज करते हुए हम प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन. If we have a look on the cellular proteins, about 80% of the proteins, they are expressed in the form of complexes. And their expression or working or functions, they have been regulated by different mechanisms. And one of the technique that we can use to study the interactions of such multi-complex proteins, it may be the application of phage display technologies. And here one can quote the example of some membrane transport proteins in bacteria. Like in case of gram-negative bacteria or E. coli, outer membrane, it may contain different type of membrane transport proteins. क्योंकि सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाज़ दफ़ा चैनल्स या पोर बनाने पड़ते हैं ताकि जो सलूट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक्सचेंज हो सके. तो इस तरह से इकोलाई में बहुत सारी सरफेस मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटीन्स हैं. एंड टू एग्जांपल्स आर TON-B protein or BTUF protein. So these are the examples of membrane surface proteins. And their interaction has been studied by using phage display technology, and it has indicated that these two membrane surface proteins, they have some determinants that are interacting with each other. So in this case, the one protein like the TON-B, it can be used as a target for the detection of other membrane protein like the BTUF. तो इस तरह से एक प्रोटीन जो है उसको हम एज ए टारगेट यूज करते हैं और दूसरी प्रोटीन को एक्सप्रेस करवा के ऑन द फेज सरफेस तो उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज द प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. In this way, in enzymology, the enzyme substrate specificity, it has also been studied by using this technique. But the most important application, it is the generation of antibodies, that by cloning or ligating specific DNA segment that is responsible for the synthesis of antibodies. It can be ligated with phage coat gene, and then the antibodies, they can be expressed, and those antibodies, they can be used for different purposes. मिसाल के तौर पर एंटीबॉडीज को हम डायग्नोस्टिक में यूज कर सकते हैं. If you remember, antibodies, they are highly specific in their reactions. Either they are going to react with certain macromolecules or even some pathogenic or infectious agents in the body. So when infectious agents, they enter into the body, then those antibodies, they can recognize a particular microbe and the reaction is highly specific. So such generated antibodies, they can be used for the detection for the pathogen. So it finds its application in diagnostic
tools or procedure. In addition to that, it can also be used for the epitope mapping. Epitope, I think we discussed somewhere in earlier lectures that epitopes, they are the determinants of the antigen. So antigen are those agents that can induce the production of antibodies. And here the antibodies, they are going to react with or interact with certain determinants of the antigen. And those determinants of antigen, they are called as the epitopes. And the gene display technologies, they can also play a role in the mapping of the epitope. So these are a few applications of the phage display technologies.